Hey everyone, I'm Meenu, Maths tutor at Meenu's Maths, taught more than 10,000 students in last 18 years. Awarded as Best Maths Teacher of the Year award recently. And today I have invited, there is some internet issue, technical issue I think so. I hope she will be soon here. Hello. Hi, Meenu, can you hear me? Can you see me? Yes, Because I can't. I can hear you. Can you hear me? I can only hear you. I can't see you. I don't know what's wrong. Okay, so can we start in this way? हाँ जी, बिल्कुल मुझे आप नहीं दिखाई दे रहे हो. That's the only thing. Okay, I can only see myself. I can see me and you also. Hi Astha. Oh, Astha is saying good to see you both together. Hey, It means we both hey, are visible. Asta. Okay, so without wasting time, let's get started with our honorable guest Nidhi Saini, a Josh Talk speaker and first woman to represent India and South Asia on world stage in the World Championship of public speaking. That is the reason that Nidhi is here to give my students some tips and tell them the importance of public speaking in student life. Nidhi is public speaking coach, corporate trainer, and emotional clarity consultant also. So welcome Nidhi to Thank accept. you. Thank you so much to accept the invitation. Thank you. So, Thank you so much. so first of all, quickly tell me that how are you in this public speaking coaching? So, like I told you earlier, this is not something that was planned for me. This was not on my bucket list at all. Having said that, I studied a totally different textiles, apparel. मेरा background ही एक अलग था. But when I moved into education, that's when I realized that speaking can do so much. This can do wonders. Uh, just through whatever I know or possibly what I can contribute in somebody's lives. It is such a beautiful way of transferring knowledge and making an impact. And that's how I kind of got into speaking, started as an ESL trainer, then realized that English nahi hai. English is one of the biggest reasons of somebody being fearful and underconfident. So I moved out of ESL and moved into public speaking because I wanted to move into confidence building. And that's exactly my reason why I'm a public speaking coach. That just own yourself. And that's my little journey of being here, what I'm doing today. Thank you, Riddhi. Thank you. So good, so sweet. So first of all, as you know that I'm a maths tutor and my students are teenagers. So Mhm. I want to ask you that what do you think that how the public speaking impact teenager students, their personality and their future success? So, like I was mentioning, when we technically got disconnected, I personally feel, ये मेरा मानना है, that as children we are so curious. बच्चे इतने curious होते हैं. जब मैं अपने बेटे को भी देखती हूँ, मैं और बच्चों को भी देखती हूँ, they're so curious. But the moment we start studying, we go to school, we are usually taught, चुप बैठो, बोलना नहीं है, काम करो, इसको ऐसे ही करना है. So you know that curiosity goes away and then slowly हम लोग बोलना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं. And then we become so fearful of how things are, of just putting forward that point. Even in a classroom, there might be 30 odd students sitting. किसी को एक point समझ नहीं आएगा, लेकिन पूछेगा कोई नहीं. बहुत ही रेयरली होते हैं जो लोग पूछते हैं, पर पूछेगा कोई नहीं ये सोच के कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा. They're going to laugh at me, not realizing कि अगला भी यही सोच रहा है कि they're going to laugh at me. So everybody's sitting quiet. We do not even allow them to speak up. And what public speaking can do. Public speaking is not just coming on stage and speaking. When I am speaking to you right now, this is public speaking. When I'm speaking to anybody around me, that's public speaking. When I am talking to
anybody in my family or my friend circle, or possibly debating, presenting something, that's all public speaking. So what it can do to teenagers is like it can build so much of confidence. We'll have confident adults जब वो बड़े होंगे, when they enter into their professional world, in the professional world, they're going to be much better, confident individuals who can own themselves, who will know how to put forward their point, right? So if we start early, we allow students to express themselves. It can groom their personality. Personality डेवलपमेंट तो फिर बचपन से ही शुरू हो गया ना, रादर दैन कि बड़े होके हम शुरू करें कि तुम बोलते क्यों नहीं हो. सो that is the least that we can do to kids. Allow them to speak so that they can build on their confidence and their personality. Yeah, really, Why am I not really. able to see you? I can only see Ah, myself. I can't say that. Why are you not? Because again, it is happening some technical issues. Give me just 1 second, please. Quick 1 second. Hey, Jay. I Yeah, can see yeah. you. Can you see me? Can you see me? I can't see you. Okay, fine. So thank you everyone for joining. Nidhi Rawat, Jay, and it's Prajapati, Astha. Thank you for joining. I want to go to the next question. If I ask you, in your experience, what specific skills do teenagers gain through public speaking? As we were talking a little bit, like as I told you, that confidence. What do you think? What are the basically skills that students gain through public speaking? See, the most important is communication. ये पूरी जिंदगी हम लोग जो करते हैं, इट इज वो सब कुछ कम्युनिकेशन पे टिका हुआ है. दैट इज द बेस ऑफ एवरी रिलेशन दैट वी मेक इन दिस वर्ल्ड, बी पर्सनल प्रोफेशनल. It allows you to build up on your communication. It allows you to build confidence. It allows you to think. When you're speaking, आप सोच भी रहे हो. Just having random conversations, it allows you to think in different ways. Critical thinking जिसको हम बोलते हैं. It allows you to build empathy, emotional intelligence, emotional quotient जो होता है उस पे work होता है. When you're thinking, when you're understanding, when you're listening to others and you're reacting, it's somewhere helping you to build on your emotional EQ aspect of you. It helps you to overcome your fears. You can express yourself more freely. You can own up to yourself. आप बात कर सकते हो अपने बारे में, लेकिन हम लोग fears की वजह से नहीं कर पाते हैं. बच्चे भी नहीं कर पाते because we do not give them that space. So you can talk about yourself more assertively, and of course it allows you to make friends. कितनी बार हम लोग जाते हैं ना, मम्मी पापा ले जाते हैं. हम जब छोटे थे, आजकल के बच्चे भी, चलो चलो पार्टी में चलना है, हमें शादी में जाना है. मैं क्या करूंगी वहां जाकर, नहीं नहीं नहीं, घर में अकेले नहीं रहोगे. यू गो देयर एंड यू लाइक, हेलो अब मैं क्या करूं, आई डोंट नो एनीबडी. एंड देन यू आर फियरफुल कि मैं किसी से जाके क्या बात करूं. लेकिन अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप बोल सकते हो, आप बात कर सकते हो, तो आप जाके कोई भी नया दोस्त बना पाओगे बाय हैविंग अ स्मॉल टॉक. यार नेटवर्किंग कर लोगे. तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे बहुत अच्छा खूबसूरती से करते हैं ये चीजें, राइट? सो it's so easy to make friends. It's so easy to build a network. And slowly when they enter the professional world, they can be master networkers, right? So So basically, कितना कुछ है जो एक छोटा सा पब्लिक स्पीकिंग से आ सकता है. means if teenagers develop this public speaking skill, they can have better communication, they can have they can overcome their fears, and they can make a better relationship, good friends, and even by when they will be adult, they will be having good relationship, good business. Am I right? Because in each and every kind of business, communication is it's Everything. main root kind of thing. सी, हम लोग इस दुनिया में हर पॉइंट पे हम लोग अपने आप को बेच रहे हैं. ओके, Definitely. we are selling ourselves.
we are selling our Hmm. ideas, we are selling ourselves to people, we are going in an interview, we are selling ourselves. जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हर जगह आपको स्पीकिंग की जरूरत है, बिना बोले तो कुछ भी नहीं मिलता है. So Yes, to yes. to go through the sales process, अगर टेक्निकली बात की जाए, तो हम जो सेलिंग कर रहे हैं अपने आइडिया से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं या चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारी बात समझे, उसके लिए चीज पॉइंट को ठीक से रखना कितना जरूरी है, एंड उसके लिए Yes. बोलना जरूरी है. सो दिस कैन बिल्ड, लाइक यू सेड, build businesses in the future. Yes. Let's jump to the next question. In your experience, uh, okay, can you share some examples of how effective public speaking skills have positively impact the lives of teenage students who have worked with you? Will you share some examples from your students? Definitely. And so I've been working with students young as well as teenagers and even college students in different capacities of communication, public speaking being one of them. And so I've had students who would not even speak up in the first few sessions that we've ever had. And by the time we finish a particular module or a program, they would be standing in front of the entire group and presenting their thoughts. And I would say these are students. So recently, I'll share that with you. I go to a college as a guest faculty, and we are working on human skills. We're working on skills, employability skills, and there's young students. Okay, basically maybe like 20-year-olds, as good as teenagers की बात करें. So something that helps a lot. These are students who do not know English too well. उनको English नहीं आती है. So when we started out, all that I told them is that आप आओ और बस बात करो. टूटी फूटी इंग्लिश में आएगा, no problem, just talk. So they started Hindi English mix, पे पूरा हिंदी आता था. But now, and because they were very fearful, but now, after a few sessions, maybe two, 3 odd months now, they come on the stage, they speak in front of an entire group in English, not even caring about who is thinking what about them. They are communicating. See, it's not about get perfection. It is about taking action and getting over that fear that you have of speaking. Polishing बाद में की जा सकती है. It's about just taking action and doing it. And that is a huge step done, because when fear goes away from here and from here, then you start taking action, irrespective of what others are thinking. And when that goes off, you own yourself. And that's all we want in public speaking. Yeah, that's beautiful. That's beautiful. And even young kids as old as 13 or 14 who I have actually taken sessions with, today they are proudly presenting, delivering presentations in their classrooms, and even taking participating in debates and all. So I think that's a huge step. करने की देर Yeah, है. yeah, sure, sure, sure. Thank you so much. So, what do you think, Nidhi? What strategies or approaches do you recommend for students or teenagers? Be, you Hmm. know, for public speaking, would you like to share some strategies? जैसे कोई स्टूडेंट है, if means teenager, बच्चे की बात कर रही हूँ, if he or she is having fear of stage, would you like to share some strategy kind of thing कि कैसे उनको आगे आना चाहिए? So, you're a teacher, you're a parent also. Why do you feel किसी को भी fear होता है? अगर आज आप और मैं ही fearful हैं किसी चीज के लिए, हम क्यों fearful हैं? We are fearful because somewhere in the past किसी ने टोक दिया होगा, किसी ने रोक दिया होगा, किसी ने बोला होगा ये सही नहीं है. एक बार नहीं 10 बार बोला होगा. एंड जब लोग बोलते हैं तो अंदर एक fear बैठ जाता है कि यार मैं नहीं हूँ ठीक, मेरे से नहीं हो पाएगा, लोग हंसेंगे. So whatever fears we have, कहीं ना कहीं ये कहीं से तो आ रहे हैं ना, किसी past experience से आ रहे हैं. तो सबसे पहले
We need to stop judging. At least we cannot expect the entire world, but at least जो भी बच्चों के close groups हैं, that's like parents and educators and friends. We need to stop judging. So सबसे पहला support तो वही होना चाहिए. Fine, चलो वो थोड़ा देर से आता है. I understand human psychology, but we need to provide opportunities like presentation, debate, speak for or just 2 minutes, just 1 minute कि किसी भी topic पे impromptu speaking आप बोलने की opportunities देना बहुत जरूरी है. I remember when I was an educator and I was teaching in schools years ago, every morning we used to have just a minute session before हमारा class start होता था या दिन start होता था. So the first period in the morning, just a minute, and जिसका भी आता था a chance, 2 children every day would come up in front of the class and speak on a topic, random topic, which was out of a chit. We would just do that. And that made them overcome that fear कि हम बोल नहीं सकते. Right? So it is very important to provide opportunities in different ways. Presentation लोगों के सामने, अपनी class के सामने, चाहे वो छोटा सा ही 2 मिनट हो या 20 मिनट हो, but they need those opportunities. Secondly, we need to support them in structuring their thoughts. आपके मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें हैं ना, लेकिन हमें वो एक थॉट को पकड़ के उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है वो बहुत जरूरी है. नहीं तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे, अगर हम ये छोटा सा सपोर्ट दे पाए, अगर हम उनको रीडिंग के लिए इंकरेज कर पाए, रीडिंग से क्या होगा, आपको डाइवर्स टॉपिक्स के बारे में पता चलता है, तो आप कुछ भी बात कर सकते हो. यू कैन पिक अप ऑन अ कॉन्वर्सेशन. Absolutely right. Absolutely That right. is something that can happen. रिकॉर्ड करो अपने आप को एंड रिव्यू करो कि क्या चीज बेहतर थी, क्या नहीं थी. राइट. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है. हम लोग कंपैरिजन तो करते हैं, वो देखो उसका दैट चाइल्ड इज डूइंग सो वेल, व्हाई कांट यू डू इट. गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि कहाँ पे वो बच्चा इंप्रूव कर सकता है. दैट इज मच बेटर rather than comparing, because everybody has their strengths. और strengths की बात करें तो I believe a lot in leveraging on your strength. Okay, मेरा परफेक्शन आपका परफेक्शन नहीं हो सकता, आपका मेरा नहीं हो सकता. सो व्हाट इज माय परफेक्ट इज माय स्ट्रेंथ एंड आई कैन वर्क ऑन दैट एंड पॉलिश दैट फर्दर. सो लेट्स सपोर्ट द स्टूडेंट, द चिल्ड्रन टू स्पीक अप, ओनिंग देमसेल्व्स. जो भी उनके पास है, अगर हम उनको बोले कि आप, अगर इफ सेंस ऑफ ह्यूमर इज योर स्ट्रेंथ, यूज इट. If using body language is your strength, use it. If using emotions is your strength to present, use it and present and share. है ना? So that is very, very important. Feedback कैसे देना है? Peer feedback होना चाहिए. It's so, trust me, this is beautiful. Peer feedback. I have done it in my classrooms and my sessions. It's beautiful. मेरा feedback अगर student को जाएगा, तो वो सी authority देखो, मैं यहाँ हूँ, मेरा स्टूडेंट यहाँ है. टेक्निकली हायरार्की देखी जाए तो वो हमें ऊपर देख रहा है. लेकिन जब हम साथ में देख रहे हैं ना, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बोलेगा, यार तूने ना, मुझे लग रहा है अगर ऐसे बोलता ना मुझे ज्यादा बेहतर समझ में आता, उसको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा. अगर हम उनको फीडबैक देने का तरीका सिखा पाए ना, तो पीयर फीडबैक वर्क्स वंडर्स. Yeah, beautiful. Right? Beautiful. So What that I is, am, as a parent or an educator, what can we do? We can give them opportunity to speak. Huh? And if I talk about the candidate student के बारे में अगर हम बात करें, तो this one strategy that I understood, they should have little habit of reading, because उससे उसके माइंड में थॉट्स और ज्यादा आती हैं, जिससे कि वो he or she would be able to speak something, because he or she will be having something to say, to share. yeah. कॉन्फिडेंस इससे भी इंक्रीज होता है. So whoever is And listening to me, so one more thing which I want to say is that in schools especially, public speaking should be across subjects. It cannot be just one subject कि इंग्लिश का हो गया या हिंदी का हो गया तो आपने बोल लिया. It needs to be across subjects. अगर आप मैथ भी पढ़ा रहे हो, okay, come here and explain it to people. They should be able to explain any point, put forward or speak in front of people. yeah, That's the whole idea. Science है तो आ जाओ यहाँ पे आकर एक छोटा सा presentation दे दो, तुमने क्या सीखा. That is going to allow them to speak.
एंड द मोर दे स्पीक एंड एंजॉय, वो अपने तरीके से जो समझाएंगे ना, उनमें उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. एंड वी एज अडल्ट्स नीड टू बी पेशेंट, बिकॉज ओवरनाइट कुछ नहीं चेंज होने वाला. हम्म. So we need to give them that time to change. Change takes time. Polishing takes time. Give them that time to grow. Yeah, it's really so Nidhi, would you like to give some message to my students and to parents? Before that, I just want to read something. Charming Desert Rose. Hope I am reading the name right. She is saying that kids are not willing to learn. That she asked that how to make my son willing to learn. So if we talk about willing to learn, अब यहाँ पे she has not specified what she wants to ask. Means public speaking में he or she is not interested to learn, या फिर वो मैथ्स की बात कर रहे हैं. किसी भी टॉपिक पे if I ask you निधि, बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है कुछ करने में, पेरेंट्स का वहां पे क्या रोल है? बिकॉज एज अ पेरेंट्स दे आर आस्किंग ना, बच्चा सीखना ही नहीं चाहता, कुछ करना नहीं चाहता. इवन इफ आई आस्क यू जस्ट एज यू हैव गिवन द स्ट्रेटेजी दैट दे शुड इंक्रीज रीडिंग, मगर अगर बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट हियर? I always say, be the role model. You want somebody to do something, do it yourself, they'll follow you. And बच्चों के साथ तो सिंपल है, अगर आप चाहते हो ना कि वो कुछ करें तो आप उनके साथ करो. और पढ़ाई की जहां तक बात है, सॉरी बट किसी को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, शायद बहुत कम होंगे. मुझे भी नहीं अच्छी लगती थी. एंड you know, nobody likes to study because there's so much to study, right? Having said that, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे को पढ़ना चाहिए, रीडिंग की आदत डालनी चाहिए, आप उसके साथ रीड करिए. बिकॉज बच्चा, अगर आप फोन पे हो और आप बच्चे को बोलोगे जाओ जाके पढ़ाई करो, रीड करो, वो क्यों करेगा? आप तो कर ही नहीं रहे ना उसके सामने. So you will have to set an example. If you want the child to look after his fitness, exercise करे तो आपको करनी पड़ेगी. अगर उसको बोलते हो कि तुम जंक फूड ना खाओ तो आपको नहीं खाना पड़ेगा. So there are so many things. We have to be that example for them. Another thing, अगर आप चाहते हो कि you know, you want to implement, अगर okay, she's writing my daughter KG में इतना परेशान हो रहे हो, charming you can't do this to us. Such a young child. Yeah, I want to answer charming Desert Rose. She is saying my daughter is in KG2. She never wants to study. One thing is this, अभी अभी निधि ने बोला बच्चा कोई भी नहीं पढ़ना चाहता. If she is in KG2, मेरे ख्याल से उसको नहीं पता होना चाहिए कि वो पढ़ रही है. It should be fun. Means बच्चे के लिए हमने क्यों स्टडी को ये स्टडी बनाना है? Why you know मदर है या टीचर है, ये छोटे बच्चों के स्टडी ऐसे होना चाहिए कि गेम गेम में कब स्टडी होगी बच्चे को पता ही नहीं चले. Right. आई होप दैट इज द वे, दैट इज द राइट वे. हम छोटे बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बच्चा हमारे पास बैठेगा और पढ़ेगा, होमवर्क करेगा. नो, they shouldn't know. Wow, game is going on and after one thing mama is saying okay, write 2, write 1, write something like that. कि means उसका जैसे I want to answer this thing here, Meenu. Sorry, I'm cutting you. No problem. पांचों उंगलियां अलग होती हैं. You cannot compare a thumb to that little finger. You cannot do that. अगर आप इतने छोटे बच्चे को कंपेयर करोगे क्योंकि उसके दोस्त होमवर्क कर रहे हैं और आपका बच्चा नहीं कर रहा है, आप सोचो कि आपने 6 साल के बच्चे के अंदर ऑलरेडी आपने वो बीज बो दिया है कि वो कल को जाकर कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि आप उसका कंपैरिजन तो अभी से शुरू कर दिया है. राइट? बनाने सिखाओ, उसको एंजॉयमेंट आनी चाहिए. अदरवाइज ड्राइंग्स करके सिखाइए, विजुअल्स के साथ सिखाइए, कराइए. बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका बच्चा, सी आई एम नॉट अ फैन ऑफ सिटिंग नेक्स्ट टू द चाइल्ड व्हेन ही स्टडी. आई एम नॉट अ फैन. ना मैंने किया अपने बच्चे के साथ किया था. यस, आई वुड बी अराउंड टू सी कि वो कर रहा है, लेकिन मैंने इतना स्ट्रेस नहीं लिया था कि केजी में मेरा बच्चा होगा तो मैं. बट आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बिकॉज आजकल स्कूल्स क्या कर रहे हैं. लेकिन आप उसके लिए क्या इनोवेट कर सकते हो? उसको हो सकता है कोई डिफिकल्टी आ रही हो, शायद वो इसलिए नहीं कर रहा हो या कर रही हो.
सो आप उसके साथ बैठकर उसको एक कहानी के तौर पे समझा दो, शायद समझ में आ जाए, राइट? आई एम श्योर मीनू आप भी मैथ्स ऐसे ही पढ़ाते होगे, उसके सम्स ऐसे ही कराते होगे ना, कोई Yeah, it थोड़ी goes देर very करके। interesting way as you were telling that in my class students explain a lot of things that and they get a lot of chance to speak. तो आपकी बातें सुन के मुझे लगा some kind of public speaking goes in my class because they are allowed to express everything. And when they speak in front of teacher, in front of other students, it's really beautiful and it's राइट really gives their confidence a lot. Fine. राइट राइट। बिल्कुल, इतने छोटे बच्चों को तो खेलने दो, थोड़ा सा एक्सप्रेस करने दो। आई एम सैड टू सी कि केजी के बच्चे भी कितना मतलब प्रेशर स्कूल डाल रहा है, होमवर्क होमवर्क फॉर केजी। मेरा इस वक्त मुझे मुझे हाँ, अजीब सा हो रहा है ये सुन के। वैसे हम बात कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग पे, लेकिन एक छोटी सी बात ये मैसेजेस को पढ़ के मेरे माइंड में जो आ गई है, आई वांट टू से एवरी एंड एवरी पेरेंट, you are good or not in maths. At this time I'm specifically talking about maths. It doesn't matter. बच्चे की एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उसका अपना माइंड है। ऐसा कुछ नहीं है दैट इफ यू आर नॉट गुड इन मैथ्स तो आप, ये कई बार ना पेरेंट्स के मन में एक डर होता है मेरा बच्चा भी नहीं अच्छा कर पाएगा। नो, सबसे बड़ी बात, प्लीज डोंट से द चाइल्ड आई वॉज नॉट गुड एट मैथ्स, मुझे डर लगता है, मैथ्स डिफिकल्ट होता है। प्लीज डोंट यूज दीज वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। तो हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से थोड़ा हट गए, वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक बेसिकली है पब्लिक स्पीकिंग एंड निधि एक्चुअली यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ गुड ideas. So something that I want to add here, one thing that I have understood from Nidhi, public speaking, whether you are doing in English or Hindi or in any other language, it doesn't matter. अगर आपको English नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि that you can't be a good public speaker. तो English को कहीं भी अपने जैसे अपने रास्ते में उसको बीच में मत आने दो कि इंग्लिश अच्छी नहीं आती तो आई एम नॉट अ गुड पब्लिक स्पीकर। अनदर थिंग इज दिस दैट पब्लिक स्पीकिंग increase confidence, communication level, increase our relationship, increase business, a lot of things, increase, our good relationships. And for good public speaking, we should, a student should read books because ऐसा करने से उनके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं एंड दे वुड बी एबल टू से समथिंग, मीन्स जैसे उनके पास कहने के लिए कुछ होगा। बिकॉज जहां पे नॉलेज ज्यादा होगी ना, तभी तो हमारे पास दूसरों को सिखाने के लिए भी कुछ होगा। राइट। Isn't it? So And one these more all thing, we need to allow our kids to express. हम लोग बोलने नहीं देते, तुम चुप रहो। हम लोग बहुत आराम से बोल देते हैं, तुम चुप रहो, तुम्हारे मतलब की ये चीज नहीं है। We need to allow our kids to express and speak up. If we don't do that, they will never be speaking. And then फिर हम ही लोग रोते हैं कि यार तुम बोलते नहीं हो, पर क्या हमने उन्हें बोलने दिया? हमने तो उन्हें रोक दिया ना। So, that's also something we as parents and as educators, everybody needs to be mindful of. Yeah, so thank you so much, Nidhi, for coming here and giving so beautiful thoughts to my audience. Thank you so much. Thank And you. anyone want to connect to Nidhi for their kids, for public speaking coaching, and even she is emotional clarity consultant also. You can connect to Nidhi. And if you want your child for maths classes, I'm always here with you. Yes. So thank you so much. It was really very Thank nice. And thank you you. everyone who joined the session, Skill and Style, Yadav, and Charming Desert Rose. Charming Desert Rose, if you want, you can connect me personally. I will try to sort out your thing because she's saying she feels crying. So I will definitely try. Ish, I'm sure you will. a lot of persons has joined. Thank you so much, everyone. Thank you, Anchal. Thank you. Thank you so much, Meenu. It was a pleasure. Manish, thank you so much. Bablu Thingra and
Shweta Khatal, Abhishek, a lot of has joined. Thank you so much for making it a successful session. Thank you, and big thank you to Nidhi. I have also learned from you a lot, and definitely I'm going to use it in my class also as an educator also. Thank you so much. Bye. Bye, Nidhi. Thank Bye, you. Bye bye. Have a good day, everybody. Thank you. Bye.